Multisoft Virtual Academy, with over 21 years of experience, offers 1,500 plus courses, partners with 10K plus experts, serves 2,000 plus corporates, has trained 1 million plus individuals, and earning a 4.5-star rating. Here we share the overview, benefits, and facts. We have created a business partner. Here we have set up the organization structure, right? Yeah, correct. The After organization that, structure, this yeah, one we did the partner. configuration for a business partner. But Customer account. we were stuck somewhere, I think. Yeah, means while creating business partner with purchasing role or finance role, system was not allowing to do that because of a number range issue. Right. Configuration is pending, that is direction BP to customer. Yeah, correct. ये business volume है, see business volume is a different thing. Correct. Business volume है जो different है, and condition contract जो है creation का, that is different thing. Okay. So you can ask to a developer to give the radio button. Radio button. स्क्रीन पे, ठीक है. Okay. स्क्रीन पे जब वो अपलोडर बनाएगा तो वो 2 रेडियो बटन देगा, one for the condition header upload and second for the business volume upload. Here, let's say, okay, how I will show you. Okay, let us see radio button like let's say VA05, go to VA05, ठीक है. This is the radio button, right? It is called radio button. If you want to download the open order, you have to select it. If you want to download the all order, you have to select it here, right? Correct. Yeah. You ask to a developer give the radio button in the uploader selection screen, initial screen. One radio button for the condition contract and second radio button for the business volume update. Okay. So जैसे ही user जाएगा, वो अगर उसको let's say कि condition contract update करना है, just they have to select this option and execute it and upload the format, that uploader. If they want to upload the business volume, just they have to select business volume here and execute it, select the format and save it. Okay. But here you can't combine these both sheet in the single condition contract and business volume because these two are different thing. Business volume जो है वो हम different है, जहाँ पे हम article वगैरह को define करते हैं, उसको दिखाते हैं, right? करेक्ट. और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ये है कि उस पे हमें कितने का अमाउंट पे क्रिएट करना है, राइट? वो कैसे वर्क करेगा? राइट. सो यू हैव टू चूज द रेडियो बटन. एफएस में लिख दो कि उसको ये रेडियो बटन बनाना है, ठीक है? सिलेक्शन स्क्रीन पे. ओके. we तो मतलब हम पहले हम हेडर का डेटा, हेडर आइटम एंड कंडीशन रिकॉर्ड्स का डेटा अपलोड करेंगे और फिर बाद में जाके बिजनेस वॉल्यूम सिलेक्शन क्राइटेरिया अपलोड करेगा, करेक्ट? राइट. तो वो फिर मैच कैसे होगा? मतलब अभी समझो मैंने कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 के लिए मैंने डेटा अपलोड किया, कंडीशन हेडर आइटम एंड कंडीशन रिकॉर्ड्स वाला, और फिर जाके बिजनेस यूजर कंडीशन 1 के लिए उसका बिजनेस वॉल्यूम अपलोड करेगा, करेक्ट? देखो, लेट्स सी, पहले हम क्या डिफाइन करते हैं? पहले कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या पहले बिजनेस वॉल्यूम डिफाइन करते हैं? पहले हम कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, बट उसमें हम बिजनेस वॉल्यूम सिलेक्शन स्क्रीन भी डिफाइन करते हैं ना? ओके, सी, लेट्स से हियर suppose this is the customer service, customer rates, right? WCC condition contract. Yeah, correct. Go to create. This is the condition type. Okay. You can choose anyone like sales and purchasing. Okay, whatever you want. Let's say this is the sales. That's okay. You choose the purchasing. You have doubt for the purchasing, right? Yeah, correct. Purchasing. Okay. So purchasing on what? Purchasing rebate. Purchasing rebate. 0P. No. 0P something, I think. 0P. OP01. OP01. Okay, purchase order. Let's say purchase order.
Okay. Okay. Here we have selected. Continue it. There is a business volume selection area, right? Yeah, correct. Extend it. And किसके लिए करना है? Let's say purchase organization. Okay. Let's say एक purchase organization पे हम करते हैं. हम supplier wise पे नहीं जाएंगे, because supplier wise पे जाएंगे तो we have a multiple supplier in the system, right? But purchase organization we have a limited purchase organization 2, 4, 5, 10 maximum, right? Right, So, right. the purchase organization here. This is the initial status, okay? Limit. Okay. Here you have to enter the PO. Purchase organization. Correct. Let's say this is the SAP standard. ठीक है, इतना ही चीज इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो तुम, इतना ही चीज इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। इंक्लूड करता हूँ मैं इसको क्योंकि अपने को चाहिए, ठीक है। करेक्ट। अब एक लाइन में और एक्सटेंड करता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ मटेरियल पे, ठीक है, क्योंकि अपने को मटेरियल ही पता होना चाहिए, राइट। करेक्ट। मटेरियल, दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, वी हैव टू एंटर योर मटेरियल, राइट। ये हमारा जो है बिजनेस वॉल्यूम का सिलेक्शन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल वगैरह दिखाना है, ये बोल रहे हो इस वाले में, राइट। करेक्ट। इस वाले में, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज राइट। सपोज हमने कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हमने अपडेट कर दिया, तो जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट अपने को क्रिएट हुआ है उससे ये बिजनेस वॉल्यूम कैसे मैच करेगा, राइट। हाँ, राइट, यस। सो बिजनेस वॉल्यूम के लिए फिर ऐसा करो कि अलग से शीट क्यों बना रहे हो उसे, व्हाई यू आर नॉट एडिंग बिजनेस वॉल्यूम हियर ओनली इन दिस सिलेक्शन एरिया। हाँ, मतलब हम एक ही शीट यूज कर रहे हैं, हेडर एंड ये वाला शीट यूज कर रहे हैं ऐसा सिमिलरली। नहीं, बिजनेस वॉल्यूम के लिए अलग कर रखे हो ना यहाँ पे, यू नो। हाँ, शीट मतलब शीट 1 शीट 2 ऐसा यूज कर रहे हैं, मतलब तो देखो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ही अपने को बिजनेस वॉल्यूम जो है वो दिखाना पड़ता है, राइट। करेक्ट। हम बिजनेस वॉल्यूम कोई अलग से डिफाइन नहीं करते हैं, राइट। राइट, यस। During the condition contract creation we have to define business volume in this option, right. So better what you can do, you insert one column here, okay, before purchase organization, any field here, okay, you insert any field, let's say before purchase organization, okay, insert field, add there business, this field first, field combination is a mandatory, बिकॉज फील्ड कॉम्बिनेशन से अपने को पता चलता है कि ये क्या है, कस्टमर है, वेंडर है, क्या है। जैसे हमने 4 लिया था परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 9 लिया के लिए। सो यू फील्ड कॉम्बिनेशन यू हैव टू मेंटेन हियर, फील्ड कॉम्बिनेशन। हाँ, फील्ड कॉम्बिनेशन, हाँ, करेक्ट। यस, फील्ड कॉम्बिनेशन। सो आफ्टर फील्ड कॉम्बिनेशन यू हैव टू सिलेक्ट इट, इंक्लूड स्टेटस, यू वांट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड, ओके। सो इंक्लूड आई एंड एक्सक्लूड ई हियर। हाँ, आप वो एक्सेल में है वैसे, आप एक बार एक्सेल शीट ओपन करना, उसमें देखो बिजनेस वॉल्यूम बेस का एक शीट का नेम है ना। वन सेकंड, ओके, इंक्लूड। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे इसका फील्ड चेंज करोगे तो ये हमारा ये फील्ड जो चेंज हो जाएगा, कभी मटेरियल होगा, कभी कुछ होगा, राइट। हाँ, करेक्ट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिएबल रखो, ठीक है। डेवलपर को बोलोगे इट शुड बी वेरिएबल, या इट शुड बी वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कि इसके बेस पे डिफाइन करेगा वो, ये दोनों के बेस पे, इस वाले के, ठीक है, इसके बेस पे ये वर्क करेगा, समझ रहे हो। अगर हमने फील्ड कॉम्बिनेशन लेट से हमने 4 लिया है, 4 के मतलब हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे वो कुछ भी वेरिएबल का नाम दे देगा, यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दो, तो हमेशा क्या करेगा, इसमें जो भी डेटा को तुम डालोगे वो इस फील्ड कॉम्बिनेशन को रीड करेगा। तो किससे रिलेटेड है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है या मैटनर है या मटेरियल है, जो भी है, ठीक है। इतना ही लेट्स से एक्सटेंड वन मोर लाइन आइटम हियर एंड सिलेक्ट लेट्स से प्लांट। सो मटेरियल अपने पास नहीं है, मैं इसको प्लान कर देता हूँ चेंज, ठीक है। ओके, प्लांट है फॉर 018। तो अभी ओके, सो हाँ बोलो।
तो यहीं पे दे दो, ये बेटर रहेगा। करेक्ट। तो अभी देखना वहाँ पे एक शीट है बिजनेस वॉल्यूम बेस का, राइट? बिजनेस वॉल्यूम बेस, दिस वन। हाँ करेक्ट, यहाँ पे हमारा है वो ऐसे फिल कॉम्बिनेशन बिजनेस वॉल्यूम स्टेटस इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वैसा। यस। तो अभी देख, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हेडर है ना, वहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट। तो रुको, एक ऑप्शन इसका और है। ओके, ओके दिस इज द सिंपल ऑप्शन कि या तो हम इसी सीट को थोड़ा सा और इसको रो जो है, रो कॉलम इसको बढ़ा दें, इंक्रीज करते, राइट? इसी को इंक्रीज करेक्ट। करें। अगर हम इसको इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये नंबर तो कॉन्टेक्ट आईडी जनरेट नहीं होगा। ये कॉन्टेक्ट आईडी कहाँ से लिख रहे हो तुम? तो जब हम अपलोड करेंगे तब जनरेट होगा ना कॉन्टेक्ट नंबर। नहीं नहीं, अभी हम वो कॉन्ट्रैक्ट आईडी को ना ऑर्डर की बोल रहे हैं। अच्छा, ऑर्डर की बोल रहे हो? हाँ करेक्ट, मतलब अभी ऑर्डर अभी ये तो मतलब ओके, अभी कौन। हाँ सो हाँ लेट्स से जब हम इस अपलोडर को अपलोड करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, एक स्क्रीन पे हमें पॉपअप मैसेज देगा कि कंडीशन कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया, राइट? हाँ तो करेक्ट। कंडीशन कॉन्टेक्ट जब क्रिएट होगा तो उसका कंडीशन कॉन्टेक्ट का नंबर जनरेट होगा, राइट? अरे एक नंबर जनरेट होगा, यस। नंबर जनरेट होगा तो वही नंबर को तुम यहाँ पे डाल दो, कंडीशन कॉन्टेक्ट का ओके। नंबर, और उसके अंदर में बिजनेस वॉल्यूम को मैप कर दो, या तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे कैसे कर हाँ हाँ सकते हाँ हो? करेक्ट। हियर यू कैन एंटर कंडीशन कॉन्टेक्ट, हम्म। ठीक है। और ओके। इसमें एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा कि जब भी ये हमारा फील्ड जो है अपलोड होगा, ठीक है, तो हमेशा जो भी इसके बाद का ये जो भी डेटा है, ठीक है, वो किसको चेक करेगा? सबसे पहले इसको चेक करेगा, कंडीशन को, और इसके अगेंस्ट में वो डेटा को अपडेट अपडेट मारेगा। ओके। तो दो मतलब सेट रखना है। फिर हाँ बोलो। फिर हमें वापिस चेंज भी यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, अगर पहले। वापिस चेंज करना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा क्रेडिट रहेगा, ठीक है। हाँ क्रिएट रहेगा, यस। अब ये भी तुम्हारा क्रिएट ही है वापिस, ठीक है, ये भी तो क्रिएट है, बिजनेस वॉल्यूम तुम क्रिएट कर रहे हो, राइट? हाँ राइट। बट इस वाले केस में अगर जाओगे कि हमें पहले कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट है, उसके बाद हमें इसको क्या करना, अपडेट करना है, तो ये चेंज वापिस यूज होगा यहाँ पे। राइट। तो यू हैव टू ऑप्शन। अगर इसमें अगर डेटा को फिल करते हो तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसका रो जो है ये बहुत इंक्रीज हो जाएगा, है ना? हाँ रो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसमें एक वैलिडेशन लगा दो, लेकिन ये वेपर के लिए फिर लेंदी होगा, उसको बहुत वैलिडेशन इसमें लगाना पड़ेगा कि जब भी ये हाँ सीट करेक्ट। अपलोड होगा, जब भी सीट अपलोड होगा तो हमेशा पहले कंडीशन कॉन्टेक्ट को चेक करेगा, पहले कंडीशन कॉन्टेक्ट के अगेंस्ट में ये डेटा को अपडेट मारेगा। तो वही सिनेरियो हो गया। यू हैव टू डेवलप 2 रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन बनाओ, एक रेडियो बटन में ये कंडीशन कॉन्टेक्ट अपडेट करो, दूसरा रेडियो बटन में ये बिजनेस वॉल्यूम अपडेट करो, ठीक है। बट मतलब कंडीशन 2 कॉन्टेक्ट स्टेप का प्रोसेस हो गया, करेक्ट। 2 स्टेप पे जाएगा प्रोसेस, राइट। कंडीशन कॉन्टेक्ट जो है वो यूजर ही क्रिएट करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। जब वो कंडीशन कॉन्टेक्ट क्रिएट करेगा तो जब हम क्या होता है, पहले पहले प्रोसेस पे आओ। जब हम कोई भी अपलोडर बनाते हैं या कुछ भी बनता है, क्या होता है, किसी भी रिपोर्ट के लिए फर्स्ट हमारा सिलेक्शन स्क्रीन बनता है, राइट? करेक्ट, सिलेक्शन स्क्रीन। सिलेक्शन स्क्रीन बनेगा। सिलेक्शन स्क्रीन पे जो भी अपने को फील्ड को करना है, जैसे कि लेट्स से रेडियो बटन है या जो भी डेटा डालना होगा एग्जीक्यूट होगा, वो सारे चीज होने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैसे वर्क करेगा, हमारा आउटपुट आएगा, राइट? या करेक्ट, आउटपुट आएगा। अब आउटपुट में अपना क्या रहेगा, फाइल अपलोड करना है। फाइल अपलोड करना है, यस। फाइल अपलोड करना है। अब जब फाइल अपलोड हो जाएगा तब आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ पे पहले फाइल अपलोड होगा, ठीक है। उसके करेक्ट। बाद स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज आएगा, आउटपुट पॉपअप मैसेज ऑन स्क्रीन। क्या होगा, वेदर इट इज सक्सेस और फेल, राइट? करेक्ट। क्योंकि एरर देना पड़ेगा ना तुम्हें, यूजर को। हाँ राइट, यस, मान लो एरर कि देना पड़ेगा। मैंने 2000 कंडीशन रिकॉर्ड अपडेट कर दिया और स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं आया, इट मींस कि मैं तो ये सोचूंगा कि हमारा कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है, राइट? बट वो बैकएंड में होगा नहीं, राइट। एरर मैसेज दोगे। तो जब एरर मैसेज दोगे, ठीक है, तो फेल और पास आएगा। जैसे पास हो जाएगा, सक्सेस होगा, तो उसका कंडीशन कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट होगा। तो यूजर क्या करेक्ट। करेगा, उस कंडीशन कॉन्टैक्ट नंबर को रिपोर्ट से डाउनलोड कर लेगा कि आज जितना भी क्रिएट हुआ है, और यस। उसको लाके यहाँ पे मेंटेन कर देगा, फर्स्ट थिंग। अगर वो डाउनलोड नहीं करना चाह रहा है रिपोर्ट, तो जब ये फेल पास का जब मैसेज देगा, ठीक है,
तो इसके लिए एक काम कर सकते हो, यहीं पे उससे एक लॉग टेबल तुम बनवा सकते हो, ठीक है। ये वेपर को बोल के लॉग टेबल बहुत हाँ इंपॉर्टेंट होता है। मान लो ये फेल्ड या हो गया, करेक्ट। तो कैसे सर्च करोगे? लॉग टेबल में लॉक टेबल। हाँ, लॉग टेबल में डेटा स्टोर कर दो। क्या क्या डेटा स्टोर कर दो? इसका जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होगा, कंडीशन टाइप क्या था, सप्लायर, वेंडर, वैलिड फॉर, वैलिड टू, करेंसी, कंपनी कोड, इसमें से ही कुछ डेटा लेके लॉग टेबल बना दो, ठीक है। और उस लॉग ओके। टेबल के बेस पे उसको एक रिपोर्ट बना दो, हाँ रिपोर्ट बनाएंगे, यस। लॉग रिपोर्ट, ठीक है। ये किसका है लॉग रिपोर्ट? ये सारा ही जो है अपलोडर का है, ठीक है। अपलोड, यस। अब यूजर क्या करेगा? डायरेक्टली अपलोड करेगा, लॉग रिपोर्ट में जाएगा, वहां से डाउनलोड करेगा, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का नंबर कॉपी करेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, सिंपल। उसके बाद ये फाइल को अपलोड कर देगा फिर से। ओके। ये 2 स्टेप में जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। और अगर सिंगल स्टेप करना हो तो वैसे? देखो, सिंगल स्टेप करने के लिए इसमें ही करना पड़ेगा, फिर इसका रो जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। हाँ इंक्रीज मतलब, अभी फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हेडर में अभी अभी आपने जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है ना, उसका रेफरेंस लेते, वो मेरा एक ही लाइन आइटम रहेगा कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हेडर में, करेक्ट। बट अगर बिजनेस वॉल्यूम बेस में आएगा तो वहां पे 3 लाइन आइटम रहेगा, 111 वैसा। फिर उसको बिजनेस यूजर को वैसे बोलना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या है कि अभी समझो बिजनेस, देखो, ये हमारा लाइन बिजनेस। आइटम बिजनेस वॉल्यूम हमारा जो हमेशा होता है, इसमें मल्टीपल लाइन यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। करेक्ट, मल्टीपल लाइन अब आइटम्स। इसमें मल्टीपल लाइन होगा, तो अगर मान लो कि उसको 100 कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, तो 100 का मल्टीपल लाइन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं तो एक 2 स्टेप वैसे। लेकिन देखो, लेंथी मतलब नहीं होता है, वी आर अ कंसल्टेंट, ठीक है, वी आर अ कंसल्टेंट। सो जो यूजर बोलेगा हम वही नहीं करेंगे, हमारा काम है उसको गाइड करना, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे लिए हमारे लिए क्या हो जाता है, अगर इसमें ही अगर डालोगे ना, कल के डेट में अगर ये फेल होता है, सक्सेस नहीं होता है, इसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर किस रीजन से फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ है। और वेपर को इस शीट में वैलिडेशन लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे 3 ऑप्शन डाल दो और इसको वेरिएबल छोड़ दो, यहाँ पे फील्ड कॉम्बिनेशन रहने दो, इसको वेरिएबल डाल दो। जब प्लांट रहेगा तो प्लांट को डाल दो, ठीक है, जो भी है। हाँ, उसको डाल करके इसको सेव कर दो, लेकिन वो वैलिडेशन कैसे लगाएगा वो वेपर को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो बेटर है कि ज्यादा वैलिडेशन होने से अच्छा है कि तुम उसको 2 स्टेप कर दो। अब वो बोलेगा कि भाई 2 स्टेप क्यों कर रहे हो, राइट। बिजनेस बोले करेक्ट। 2 स्टेप क्यों कर रहे हो, उसको समझा राइट। दो, ठीक है। उसको थोड़ा सा गाइड कर दो, उसको समझा दो कि देखो, देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस वॉल्यूम in the uploader. Okay, so when राइट। we are creating the manually through VWC or WCO, okay, this is the manual process, so you just have to go there and select it. Okay, but when we are using the uploader, so there will be no option. So करेक्ट। SAP recommendation, we have to go with 2 step. Okay, ऐसे ओके। करके उसको समझाओगे तो समझ जाएगा। राइट। वाई? बिकॉज एक में डालोगे तो ये बहुत लेंदी होगा, फेल्ड के केस में तुम्हें फिर बाद में अगर मान लो सपोर्ट प्रोजेक्ट को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। राइट। ठीक है, सो माय सजेशन, यू आस्क टू डेवलप डेवलपर ए वेपर, he has to develop radio button first in the selection screen here, radio button, then after radio button ये जरूर करवा लेना, पॉपअप मैसेज विथ लॉक टेबल, विथ लॉक टेबल। यस, लॉक टेबल जरूर रखना इसको, यस। इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज एंड देन डेवलपर का क्या होता है, पेपर आज डेवलप कर देगा, हमारा गोल लाइव हो गया, उसके बाद हमारा फंक्शन के ऊपर आ जाता है, राइट। हाँ तो कल करेक्ट। के डेट में अगर कोई भी चीज होगा तो उसको आइडेंटिफाई करना, वेदर इट इज फेल और पास। पास हो गया देन नो इशू, राइट, ऑल गुड। अगर केसेस करेक्ट। फेल हुआ है तो उस केस में तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ पे फेल हुआ है, तो इसीलिए इसका लॉग टेबल में स्टेटस रिपोर्ट डेवलप बनवा लेना उससे। Okay, so let's go to SAP and we'll try to configure it again. Business partner, we have already configured, one step is pending, right? Here we are yes. putting the number in this error. Go to SPRO, cross application component, SAP master data synchronization, customer vendor integration,
business partner setting for customer integration. Then go to field assignment for customer integration, assign key here, and here we are facing this define number range. Correct. So we have created Z001, right? Correct. Who has deleted it? Someone has deleted. Z001, I have already assigned it. So let us check grouping. I think grouping is also issue with the grouping. So go to business partner, basic setting, then number range and grouping here. I think we have assigned this thing. Okay. Yeah, we have assigned. So I think now it should work. Go to BP, try to create one new customer. Organization here. Grouping is Z001. So customer has been created, this one 1005. Now extend it to sales area data. This one sales distribution. Okay, so finally see in the partner determination we have selected all the mandatory field. Okay, and two field are not editable mode, like sold to party and bill to party. But even pair and ship to party we can change it, right? So this is showing in the editable mode, but this is the mandatory field. Okay. Mandatory fields, yes. Yes, mandatory field. Now we save it. So finally we have created the customer master. Okay, customer master is created. Assign with customer pricing procedure, otherwise it will not work. Customer pricing procedure. Yeah. Then shipping condition here. Where is the shipping condition? This one 01. Yes, number range should be same. एक number range को अपने को external number range लेना पड़ता है, right? Correct. Yeah, external mark हमें करना पड़ता है, correct? Yes, so it should not be different number ranges. Okay. Right. So we have created all the enterprise structure and customer master data. So we are okay. Now we have to define the material, because without material we can't create any orders and business volume and condition contract, right? Yeah. Pending a two master data, vendor master also we need it, right? Yeah, vendor master has, yes. So material master data is maintained in different view to support various department within the organization, right? Within the organization. Like example, okay. Like example, sales department, right? Yeah, sales department. Purchasing department. Purchasing, then finance. Purchasing department, right? Production. Yeah, correct. Production side is important, like this thing, right? So material master we have to define because of to tracking the material, whether it is available or not in the stock, right? Suppose we have received the order for the 20 ton from the customer. Okay, let's say 20 ton we got the order from customer, finished good, right? So for that 20 ton, we needed all the raw material, right? Correct. Raw material. So purchasing department is important. They have to purchase raw material, right? Once they purchase, then it go to the production department for the produced raw material to finished good. Correct. प्रोडक्शन साइट पे जाएगा, फिर वहां से प्रोड्यूस हो जाएगा फाइनली, देन ये जाएगा सेल्स में, तब हम उसको बिल करेंगे, राइट?
So these all departments are important for the, and how, why it is important? Because without material master, without inventory management, we cannot track the status, how many quantity we have in the stock, right? Correct. Yeah. Right. So that is the reason. And material master data is a master data, those we are not changing on the regular basis, right? Once one master record is created, any master record, customer master, vendor master, material master, condition contract, right? Even contract is BA51, right? Sales contract. Okay. So once we have created, those master data we cannot change on the regular basis, right? On regular basis. Yes. Correct. So to material master, okay, create the material master setup, we have to define first material type. Material type should be there, okay? Because through material type only we can identify whether it is raw material, packaging material, finished good, and what, right? So we have to define the raw material. Okay. Then material group. What is a material group? We have to define material group. Yeah, material group as well. Okay. Then we have to define the valuation class. Yeah, valuation class. That would be different for semi-finished material, finished material, then raw material. Right. And suppose we have created one PO and sent to the vendor, right? We have sent to the vendor, and after 10 days we receive the goods, right, in Migo. Right. So upon the Migo system generating the one accounting entry, Migo and Miro, right? Migo and Miro, yes. Yes. So कहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं वो लोग, जो हम मीगो करते हैं तो उसमें हमारा जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, हाउ इट विल ट्रिगर, ये कहाँ से ट्रिगर करता है, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज ट्रिगरिंग, वो वैल्यूएशन क्लास को हिट करता है। वैल्यूएशन क्लास, यस। आई टेल यू कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके, so we have to define the valuation class. Okay, valuation class means किस जीएल को हिट करवाना है। सपोज फिनिश्ड गुड्स के लिए डिफरेंट होगा, राइट, रॉ मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा जीएल, राइट राइट, यस यस। सो वो जीएल को कहाँ से हिट करता है, ये वैल्यूएशन क्लास के बेस पे हिट करता है। क्लियर, यस। ओके, देन वी कैन क्रिएट द HSN कोड, right? HSN code is important for the government auditing auditing purpose. Okay, these all the things. Then I'll tell you like tables for the material master. Okay. Okay. Material master table for the material master. Okay, how many tables do we have? Okay. Okay. Clear? Yeah, clear. Okay. So is it clear? Material master, to define the material master, there is a T code, that is a OMS2. Okay. OMS2 T code. To OMS2 you can define the material master. Okay. Okay. Let's say one retail example. You are working in retail, right? Yeah. Let's say retail examples. Retail में एक company है XYZ which is dealing in textile industry. Okay. Textile industry. टेक्सटाइल का काम क्या होता है? होम फर्निशिंग, गारमेंट्स, क्लोथेस, राइट? करेक्ट, या। सो उसमें हमारा मटेरियल ग्रुप होगा, राइट? राइट, मटेरियल ग्रुप होगा। जिसमें ले लो आप, जैसे ले लो टी शर्ट, उसमें एक टी शर्ट बनाया है, ठीक है, उसमें एक टी शर्ट बनाया है, उसने एक होम फर्निशिंग का आइटम बनाया है। ओके, होम फर्निशिंग का आइटम बनाया है, टी शर्ट या जींस। ओके, ये दोनों का जो मटेरियल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे जींस है या टी शर्ट है, ठीक है, दे हैविंग अ डिफरेंट मटेरियल ग्रुप, राइट? करेक्ट। उसमें जो मटेरियल हमें यूज हुआ होगा, मतलब यू कैन सी ग्रुप ऑफ मटेरियल, जैसे हमारा क्या है, डिवीजन है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सॉरी, डिवीजन क्या होता है? ग्रुप ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल ग्रुप, व्हाट वी कैन से, अपैरल। अगर मैं जीन्स एंड शर्ट की बात करूंगा तो ये हमारा क्या होगा?
का मटेरियल ग्रुप क्या होगा, अपैरल, ये अपैरल के अंदर में अपैरल, राइट। ओके। अगर होम फिनिश की बात करूंगा तो इसका मटेरियल किस में आएगा, होम में आएगा। सो दीज ऑल आर द मटेरियल ग्रुप। आर यू गेटिंग? यस सर। जीन्स एंड शर्ट या टी शर्ट कुछ भी अगर बन रहा है तो क्या है, वो अपैरल का पार्ट होता है। ये टेक्सटाइल अपैरल का पार्ट। ये वर्ड होता है, ठीक है, अपैरल है। correct. अगर होम डेकोर लिख लो, फर्निशिंग से बेटर आएगा डेकोर। होम डेकोर का ये कोई सामान बना रहा है, इट मीन्स कि किसके अंदर इसका मटेरियल ग्रुप होगा, होम के अंदर में, राइट। लेट से कोई परफ्यूम बना रहा है कोई कंपनी, राइट, कोई कंपनी बेला विटा, लेट से बेला विटा एक कंपनी है, ओके, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द परफ्यूम एंड ऑल। इसका एक मटेरियल ग्रुप होगा, राइट। You can say Correct, material group. yes, so these are like this, you can explain to them if anyone can ask, but this is the part of MMs, no one can ask you. Okay, fine. Go to MS2, create one material group, sorry, material type, go to position, search here ROH standard, that is a raw material, select, compete, change Z 005, raw material, जिससे अपने को याद रहेगा, no need to do anything, press enter, Okay. go to position, enter your valuation class. Valuation class means your, sorry, valuation area means your plant. A plant, yeah. Okay, plant. Copy it, save it. Okay, so see, this value, this material type will not work. हमने डिफाइन तो कर लिया है, बट ये मटेरियल टाइप क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। ओके, बिकॉज मटेरियल टाइप शुड बी assigned with our valuation area. Okay, Valuation area. valuation area. Correct. Under the valuation area tab, we have to allow for this material type. We have to allow this material type to create the material. So what we can do, select it, click on quantity value update. Okay. Yeah, go to position. Your valuation area means plan, and this option should be ticked. अगर इसको टिक नहीं करोगे ना, सिस्टम विल नॉट अलाउ टू क्रिएट एनी मटेरियल इन दिस मटेरियल टाइप। अभी मैंने इसको सेव कर रहा हूँ, मैंने सेव कर दिया। लेट्स से MM01 Z005 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे एक्सटेंड करोगे ना तो सिस्टम तो मटेरियल क्रिएट ही नहीं करने देगा इसको, ठीक है, Got it. नहीं करने देगा। So this is a mandatory field. Okay, we have to take it, quantity and value update. Got it. Finally, we have created the material type, that is a Z005. Now we have to define material group. To define the material group, yes, to define the material group, T code is OMSF. OMSF. Okay, OMSF. No need to copy anything. You can direct click on new entry. I create a 01 for apparel. And save it. Okay. So material group is A01. Now valuation class is very important, ठीक है। ये MM के लिए जो होता है valuation class is very important because हमारा जो अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होता है वो यहीं से सिस्टम को हिट करता है, ठीक है। जो जब गुड रिसीव करोगे, जब GR करोगे मीगो में, तो यहीं से हमारा वैल्यूएशन क्लास को ये हिट करता है अकाउंटिंग एंट्री को जनरेट करने के लिए और पार्टिकुलर GL को पोस्ट करता है। सो वैल्यूएशन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, I will tell you, go to valuation class is SIMG. Okay, material management, valuation account assignment option होगा यहाँ पे।
account determination here, account determination without wizard. Okay, without wizard पे करना है अपन को. Okay. So without wizard, then define valuation class here. Okay. What? Define valuation class. Valuation class. Okay. So under the valuation class, there is a 3 option. First, we have to create account category reference. Then we have to create valuation class. Then we have to allow for particular material type. Okay. I told you वैल्यूएशन क्लास जो है पार्टिकुलर जीएल को हिट करता है. इट मींस पर्टिकुलर जीएल. यस. अगर वो फिनिश्ड गुड होगा तो उसका डिफरेंट जीएल होगा, राइट. अगर वो रॉ मटेरियल होगा तो उसका डिफरेंट जीएल होगा, राइट. So for that, how we can identify? We can identify through only material type, whether it is raw material, finished material, and what, right? Material type correct. हम identify कर सकते हैं, right? So that is the reason here we have to assign allow particular material type for this valuation class. Okay. So interviewer can ask you, can we assign that valuation class with material type? No. We cannot assign that valuation class with material type. We have to assign account category reference with material type. Okay. So first we will define account category reference, then valuation class, and this both should link. We will create this account category reference, then we will assign account category reference to the valuation class. Then we have to assign particular account category reference with this material type. And it will trigger to valuation class. Why? Because our valuation class already assigned with account category reference. So interview में पूछेगा कि डेबिट क्रेडिट जो होता है from where it is triggering. So you can say, sir, under valuation class. Okay. Under the valuation class we have to assign valuation class with the material type. तो बोलेगा can we assign direct valuation class with the material type? No. We cannot assign, we have to assign particular account category reference with material type, and it will trigger in the background because our account category reference already assigned with the valuation class. Valuation class. Yeah. Now go to valuation class and you can assign here directly. We have to create this code, valuation class code, and then account category reference we have already created this one. Correct. Okay. Now we have to allow to particular account material type. Particular material type को allow करना है. Okay. So go to position. Such material type we have defined, already created Z005, and here account category reference is 5500. Now it will work. Okay. Okay. So now we can create the HSN code. What is the HSN code? HSN code is actually used for taxation, right? Yes, taxation. So based on that, we do define the taxes on the materials, and after that, further we are creating the invoices or e-way bills, correct? It is a mandatory for the government portal. Yeah, like GST filing and all. Correct. Because suppose we are a service provider, IT service provider, right? So IT service provider, see, once we raise the invoice, okay. IT service provider. So we have to raise the invoice to the vendor after completion of the services, right? Completion, yes. हर इनवॉइस पे क्या देखोगे, हमारा एक एसेसन कोड होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट? करेक्ट. अगर लेट से तुम फोन परचेस करने जा रहे हो, ओके, फोन का एक एसेसन कोड होता है, ये सारा ही आ जाता है. ऐसा नहीं होता है कि हर डिवाइस का डिफरेंट होगा. नो, फोन लैपटॉप हर डिवाइस का डिफरेंट नहीं हो सकता है. जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जैसे फोन या लैपटॉप, उसका एक होता है. उसका एक ही रहता है. प्रोवाइडर का एक होगा, केमिकल का एक होगा, लाइक दिस. ओके. So we can identify, जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल होता है वो मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है फ्रॉम HSN कोड.
ऐसा तो नहीं है कि तुमने एमसीए के पोर्टल पे जो कंपनी रजिस्टर किया है उस पे कुछ और दिखाया है और तुम सेल कुछ और भी कर रहे हो, राइट? Correct. So to SSN code, you can execute directly T code. Okay, directly T code. That is J1 ID. ठीक है, J1 ID. Here click on chapter ID. Okay, click on chapter ID. Okay. Then after chapter ID, click on this button, maintain. Okay. And you can go to new entry. I'm going to create 85. This unit of exercise, EA, and description. This is electronic item. And save it. एक बार ये क्रिएट होता है, ठीक है? It has created. Now you can go to display mode and you can check, see it is created, right? Right. 85. To define the SSL code, the code is J1ID. We have created 8510. Clear? Yeah, clear. Yes. Okay. So now most important thing, okay, pricing. Types of pricing. जब हम मटेरियल को क्रिएट करते हैं तो अपने को प्राइस वहाँ पे डालना पड़ता है, whether it is valuation price, okay, moving average price और yes estimate price. Correct. Moving average price और estimate price ये अपने को वहाँ पे डालना पड़ता है. Right. Yes. Okay, to create the material decode is MM01, change MM02, and display MM03. 3. Material report you can download. Okay. Material list, okay, MM60. Material list. Okay. To delete the material you can run decode MM06. Okay, got it. Idiot. Change display report deletion. Okay, deletion. Okay. These all are the. So now table. Okay, generally we are using the high level table. 3 table for the general data. Okay, general data table is MARA, M-A-R-A. Okay, then plant data, MARC, right? M-A-R-C. Then storage location, M-A-R-D. बट S/4HANA में एक टेबल है, ठीक है, एक ही टेबल है S/4HANA में. उस टेबल से तुम हर चीज मटेरियल का देख सकते हो. ओके, मटेरियल में एक ही टेबल है, उस टेबल से तुम हर चीज मटेरियल का चेक कर सकते हो. उसमें पूरा हिस्टोरिकल डेटा उसमें जाता है, उस मटेरियल पे कितना ऑर्डर बना है, किस कस्टमर का ऑर्डर बना है, ठीक है, कितना ऑर्डर बना है, किस कस्टमर का ऑर्डर बना है, यस, पूरा देख सकते हो. ठीक है, ये तो सिंगल टेबल है. If you want to check the general data, you can check it from here. Okay, you want to check the plant level data, you can check it from here. And storage location data, we can run MARD. Okay, MARD. Correct. Okay. But एक टेबल है S/4HANA में, ठीक है, एक टेबल है. वो टेबल क्या है मैं बताता हूँ. MAKT, ठीक है, MAKT मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए. और एक और टेबल है, ठीक है, मैटडॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है, ठीक है. ओके. मैटडॉग है S/4HANA में, वो हर MM वाला को पता होता है, ठीक है. ओके, देखो, लेट मी शो यू. गो टू SS16 and रन मैटडॉग. ठीक है, ये मटेरियल का पूरा डॉक्यूमेंट, मटेरियल डॉक्यूमेंट, यस, पूरा ही डॉक्यूमेंट दिखा देगा. देखो किसने कैसे हुआ है, इसका लोकेशन क्या है. ओके, प्रॉपर डिटेल्स इसमें दिखता है. कितना पे ऑर्डर क्रिएट हुआ है, तुम्हारा पोस्टिंग, ऑर्डर करेंसी देखो यहाँ, ठीक है. सो मैटडॉग टेबल को यूज कर सकते हो कोई भी टेबल या फील्ड कस्टम प्रोग्राम के लिए. मैटडॉग में हमारा सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है. नो नीड टू रन MARA, MARC and MARD, ठीक है. You can directly use मैटडॉग. Okay. MATDOC in S/4HANA. Clear? So yeah, we clear.
we have configured on the material master, all the material master configuration like material type, material group, valuation classes, SSM code. Okay, all the tables here I have written here. Okay, then one more thing in SAP, in the material master, while creation of material master, there is a two type of prices. Okay, two types of prices: standard price and moving average. Yes. So what is the difference between standard price and moving average price? So moving average price is actually used for the raw materials, and standard price is used for the finished good. Yes, and moving average price. ठीक है. Standard price means material has been finished and it is ready for sale, right? Correct. Yeah. Ready for sale. And moving average price क्या होता है? It's a variable, right? मूविंग एवरेज प्राइस जो होता है वो वेरिएबल होता है एंड मूविंग एवरेज प्राइस का एक फार्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए, टोटल जीआर वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जीआर क्वांटिटी. ठीक है, टोटल जीआर वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जीआर क्वांटिटी. ठीक है, मूविंग एवरेज प्राइस हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. एमएम वाला को पता होता है, जैसे कि मान लो आज हमने 100 टन रॉ मटेरियल को परचेस किया है जिसका मूविंग एवरेज प्राइस है, राइट? मूविंग एवरेज प्राइस है. हमने उसको यूज किया, कल फिर से हमने 20 टन उसको परचेस किया सेम मटेरियल को, राइट? फिर से हमने किया. तो ये कैलकुलेशन ये कैसे वर्क करता है वो इस पे करता है, टोटल जीआर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल जीआर क्वांटिटी. Sorry, total GR value divided by the GR quantity. Okay, so it has been developed, configured. So now I already told you in S/4HANA system, AML activation is mandatory. Without AML activation, system will not allow to create any material. Suppose when you have created the new plant, it means whenever we are creating the new plant, material ledger should be activated. If material ledger is not activated, system will not allow to create the material. So plant 5500, this is the new plant which we have created before 2 days, before 3 days, right? So we can check it whether it is allowing or not in S/4HANA system. It is mandatory in S/4HANA, but ECC it was not mandatory. Okay. Okay. So let's try to get the material and check the error for ML activation. Okay. Selection view, basic data, general 1, 2, general plant, MRP 1 view, देख सकते हो. Changing general 2 and accounting 1. Accounting 1. And selection only on my request. Default organization. So here I'm going to enter plan. This one. Storage location, what we have created. Storage location is what is ZFG 0. Sales organization, this one. Distribution channel is X1. See, material ledger must be set productive for the valuation area 5500. Okay. We have configured everything for the material master, but even system will not allow to create because ML is not activated in S/4HANA system and it is a mandatory field. And I already told you to activate the ML currency should be same. Okay, 3 currency, your company, company code and plant. Both currencies should be same. अगर एक भी currency correct और डिफरेंट होगा, then system will not allow to activate the ML. Suppose हमारा कंपनी कोड का जो करेंसी है that is USD, कंपनी का INR है एंड प्लांट का INR है, एंड तुमने बाय मिस्टेक से क्या किया है XD01 सॉरी उसका जो टी कोड है OMX2, OMX3, OMX1 एंड CK में स्टार्ट, अगर वो एग्जीक्यूट कर दिए हो तो एक्टिवेट नहीं होगा एंड SAP में अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है कि उस पर तुम दोबारा एक्टिवेट कर पाओगे उस प्लान को. Okay. So before executing the T code OMX2, OMX3, OMX1, must we have to check whether currency are same or not. If it is not same, we change
first currency, then execute OMX1, OMX2, OMX3. AP customer. Material. So here ML activation, ML material ledger. Material ledger, that is called ML, is mandatory in S4. Okay. So T code is here. Okay. OMX1, OMX2, Okay. OMX3, and CKM start, CKM start. Okay. Go to OMX1, OMX1. Okay. OMX1 में क्या होता है, हम इसको असाइन करते हैं, ठीक है. सो OMX1 को पहले रन नहीं करते हैं, पहले हम रन करेंगे OMX2 को. एंड OMX2 में हम पहले एक मटेरियल लेजर को बनाएंगे, ठीक है. OMX, यस. ये होगा अपना डिफाइन मटेरियल लेजर. ओके. पहले मटेरियल लेजर को डिफाइन करना है. सो 9000 is SAP standard. Okay, 9000 is SAP standard. You can use 9000, but we will create an own material ledger. So go to new entry. I'll create only 5500 ml pages and save it. We don't need to define the characteristics individual because we are not going to use the multiple currency. We will use same currency both company, right? Same. Yeah. If you want to multiple currency, we have to check here. Okay, country group here. You can find out here different like hard currency, global currency, and what. Got it. We are not going to change these things. So now we can assign it. Okay, go to OMX3. OMX3. In the OMX3, we have to assign. Okay, OMX3 first. OMX3. देखो ये टी कोड मतलब इसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है. आइडियली हम एसएपी में क्या होता है, 1 मतलब क्रिएट, देन 2 मतलब डिस्प्ले, 3 में चेंज, 3 में चेंज, राइट. बट एमएल का थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो पहले अपने को डिफाइन करना पड़ता है 2 में, फिर 3 में जाके हमको असाइन करना पड़ता है, फिर 1 में जाके एक्टिवेट करना पड़ता है. See, it's a very different. So assignment here, activation. So ये लॉजिक एसएपी का मुझे भी समझ में नहीं आया कि आइडियली वो क्या करता है. 1 2 3 का सीक्वेंस रखता है, क्रिएट, चेंज एंड डिस्प्ले, राइट. क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले. बट इस एमएल के केस में उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो रखा है, सीक्वेंस 2 3 then 1. ओके, लेट्स सी. ओके. Go to position, search your valuation area measure plan, that is 5500. See 9000 is already activated, which is already activated. Yes. So we have created 5500. Select it and save it. This is the signal of the status. Okay. This is the signal of status. It is showing ML currency are allowed in FI. It means your ML is activated. Yeah. जहाँ पे इसको रेट देखोगे उसमें लिखेगा ML currency not allowed. See, here it is showing ML currency not allowed. इसका करेंसी डिफरेंट है, इसका करेंसी मिसमैच है. कंपनी कोड में कुछ और होगा, प्लांट में कुछ और होगा और कंपनी में कुछ और होगा. ML करेंसी टाइप एंड इंटीग्रेशन इन FI बोला चेक करने के लिए. ML करेंसी टाइप बट नॉट FI करेंसी. ठीक है, यहाँ पे इसने एरर दे दिया. फर्स्ट तो पिक किया है, सेकेंड में एरर दे दिया. ठीक है, ग्रीन आ गया, इट मींस इट इज एक्टिवेटेड, देयर इज नो एरर. Correct. So now it is no error. Now we have to activate it. Go to OMX1. Go to position. This one. It is showing activated. So here we have to put 2 transaction weights. Okay.
transaction list. Okay. This one, transaction list, and save it. Dependent indicator are being reset. So finally, okay, there is a two option. Sorry, my bad. First, we have to take here ML activation. Okay, ML whether see your currency is allowed, no issue. But now option last one OMX1, you want to activate this ML or not. So we have to click here and we have to choose here too. Yeah. Then it will work. And save it. Now see, after activating material ledger, live data must be converted. We have activated, even ML is activated, but अभी भी material allow नहीं करेगा creation के लिए. Okay. अभी भी material create Okay. नहीं करने देगा. Yes. See here. अभी भी create नहीं करने देगा. Why? ML is activated, but it is not productive. Okay. It is not productive. So productive में अब अपने को चेक करना होगा कि कितना error है और कितना मतलब कितना पास है और कितना failed है. So for that productive, this is the key code. CKM start. Okay. We have to execute this key code. CKM start. Enter here plan. Remove background check. Remove test run and execute it. इसका करेंसी चेक करना पड़ेगा यार.